Hello friends, in the Limitation Act series, section 1 to section 12 has already been covered. In this video, I'll cover section 13 of the Limitation Act 1963. To view the earlier parts, check the description box below. If you like this video, kindly comment in the comment box below and don't forget to click the bell icon so that whenever a new video is posted, you get a notification regarding it. So let's start with it. Section 13 of the Limitation Act 1963. Now first of all, let's have a look at the language of the Bare Act, that is section 13, the Limitation Act. Exclusion of time in cases where leave to sue or appeal as a pauper is applied for. So there are two aspects. One is leave to sue or appeal, and the second aspect is regarding the pauper. Let's read the section. In computing the period of limitation prescribed for any suit or appeal in any case where an application for leave to sue or appeal as a pauper has been made and rejected. Friends, do mark the keywords, that is, it is applicable for any suit or appeal. This is very important part for prelims point of view. And the other part is the heading itself, that is, this aspect is covered under which section of Limitation Act. As a pauper has been made and rejected, the time during which the applicant has been prosecuting in good faith his application for such leave shall be excluded, and the court may, on payment of the court fees prescribed for such suit or appeal, treat the suit or appeal as having the same force and effect as if the court fees had been paid in the first instance. Now let's discuss the section. One thing, you should mark the keywords, that is it is applicable for suit or appeal. यहाँ पे दो aspects covered हैं. One is regarding the rejection of the application and the second aspect is regarding the court fees. अब दोनों चीज़ों में देखते हैं क्या इफेक्ट होगा. पहला पॉइंट जो कि रिगार्डिंग द रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, उस केस में जितना भी टाइम लगा कोर्ट को डिसाइड करने में, दैट पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड. एंड द अदर पार्ट बीइंग जो कोर्ट फीस है आफ्टर द एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड, जो पॉपर की एप्लीकेशन है अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो उस केस में पॉपर को अपनी कोर्ट फीस पे करनी होगी, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू प्रूव दैट वेदर ही इज अ पॉपर और नॉट. एंड इसका इफेक्ट ये होगा, जो भी कोर्ट फीस है कोर्ट ये मान के चलेगा कि जिस दिन एप्लीकेशन लगाई गई थी वो कोर्ट फीस उसी दिन पे कर दी गई थी, चाहे वो 2 महीने पहले हो या 4 महीने पहले. लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. तो इसमें दो चीजें कवर्ड हैं. वन इज रिगार्डिंग द रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, अदर वन इज रिगार्डिंग द कोर्ट फीस. और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो भी एप्लीकेंट है, दैट इज द पार्टी हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ. मतलब पार्टी की तरफ से किसी भी तरह की नेग्लिजेंस या उसकी गलती नहीं होनी चाहिए. Only then the benefit of section 13 can be taken by the concerned party. यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. Let's say there is a person, Mr. X, and Limitation Act के accordingly जो एप्लीकेशन लगाने की डेट थी for taking the benefit was 15th March. और ये concerned person X, he makes an application on 13th March to take the benefit of section 13. And the court took 1 month to decide the application. In such a case, the time taken by the court to decide such an application shall be excluded, provided the applicant has been prosecuting in good faith, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें. थैंक्स अ लॉट.